हेलो एंड वेलकम। आज महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन पेपर 2 कॉमर्स के यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले फ्रॉम 2023 टू 2025। सो लेट्स स्टार्ट विद 2025 क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following statements are true in case of Indian financial markets? Option A, Indian capital market is developed, but money market is underdeveloped. Correct? Option A is correct answer because there are large number of participants in capital market such as NSE, BSE, SEBI regulatory, IPO, mutual funds, investors, traders, speculators, brokers, etc. So there are large number of transactions, and in case of money market, there are less number of transactions because interbank lending, ट्रेजरी बिल, ये सब के ट्रांजेक्शन बहुत कम लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड पार्टिसिपेशन है, इसलिए अंडर डेवलप मार्केट है। कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी एटसेट्रा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following are the term financial institutions? Term financial institution means which provides long term loans. IDBI correct, IIBI correct, UTI no, it is a mutual fund company, it is not financial institution. Exim Bank, Export-Import Bank of India provides loan for export and import purpose only to the exporter and importer. It is not for general purpose. So Exim Bank is not part of institution. SIDBI provides loan for industrial development. So IDBI, IIBI provides loan to SIC industries. So it is also part of financial institution. So 1, 2 and 5. Correct answer is option C. Next, the use of instruments within the control of central bank to influence the level of aggregate demand for goods and services by regulation of money supply and credit is known as monetary policy, economic policy, financial policy, or open market operation. Correct answer is option A because monetary policy deals with money supply, which is done by the central bank of the country. So money supply और credit को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर कवर होता है। एक्सपांशनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट. So it is done by the central bank. In case of India, it is RBI. So option A is correct answer. Next, which of the following is an advantage of informal financial system? Informal financial system means अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात हो रही है। वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, अनरेगुलेटेड और मिनिमम डिफॉल्ट रिस्क। तो हमें पूछा है एडवांटेज, ए बी सी आर दी डिसएडवांटेजेस। वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट या अनरेगुलेटेड मार्केट, ये तीनों करेक्ट है, पर वो तीनों डिसएडवांटेज में कवर होगा। एडवांटेज क्या है? मिनिमम डिफॉल्ट रिस्क, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब फाइनेंशियल सिस्टम में क्या कवर होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसमें ये जो पार्ट है, ये फाइनेंशियल मार्केट को कवर करता है, जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में क्लासिफाई होता है। और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का डिसएडवांटेज ये है कि ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं होता और मनी लेंडर्स, निधि कंपनी और चिट फंड्स टाइप के प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट और अनरेगुलेटेड मार्केट होता है, जो सारे डिसएडवांटेज में कवर होता है। जो एडवांटेज है ये वो है मिनिमम डिफॉल्ट रिस्क। रीजन क्या है कि अनरेगुलेटेड मार्केट में मीन्स इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में डिफॉल्ट होना कम होता है। रीजन ये है कि यहाँ पर जो लोन रेज करते, जो मनी लेंडर्स होते, वो नॉन पर्सन ही होते, जमींदार होते, जो पर्सन को जानते। तो जब मैं किसी और पर्सन से लोन लेता हूँ जिनको मैं ऑलरेडी जानता हूँ, सो ड्यू टू पर्सनल ट्रस्ट, social pressure and fear of consequences, I will repay the debt amount with interest. So minimum default risk is there. Option D is correct answer. Next, which of the following statements are not true? तो हमें false statement identify करना है। Equity capital
represents ownership capital, correct. Equity shareholders have residual claim on income, assets and have limited liability, correct. Because equity shareholder को जो पैसे dividend या repayment of capital मिलता है, dividend means income और repayment of capital means assets, जो capital invested था उसका repayment at the time of winding up of the company at the end मिलता है, even after paying dividend and capital amount to the preference shareholders, and have limited liability. It is also true. Okay, residual claim means they get dividend and capital at the end. Equity capital is a high risk reward source of finance, correct? Because the return depends upon the profitability of the company. So higher the profit, higher the return, higher the dividend, and lower the profit, lower the dividend. No profit, no dividend. So C is also correct. Equity share represents creditorship securities. No. Option D is correct answer. It is not true statement because creditorship represent करता है bonds, debentures, etc. So equity share represents ownership capital and not creditorship. So option D is correct answer. Creditorship का मीनिंग होता है जो debt fund होता है वो. Next, which of the following statements are true in case of non-banking financial corporations? Option A, NBFCs supplement means it helps the activities of bank in deposit mobilization and lending by providing more options to the savers and investors. Option A is correct answer. It is true. Let's check other. NBFCs only provide merchant banking and stock broking. No, it also provides loan. NBFCs are not involved in retail banking. Retail banking का मीनिंग होता है होम लोन, कार लोन प्रोवाइड करना. So are not involved? No, it is involved. So it is not correct. NBFC are involved in portfolio management and venture capital financing only. No. So option B, C, D are not correct. Option A is correct answer. NBFC supplement the activities of bank in deposit mobilization and lending by providing more options to the saver and investors. Is most appropriate answer. So option A is correct answer. Next, which of the following statements are true in case of regulations of financial system in India? First, RBI regulates banking sector and stock exchange in India. No, RBI regulates banking sector but stock exchange नहीं regulate करता है. SEBI regulates stock exchange and mutual fund in India. Correct. Option B is correct answer. SEBI दोनों regulate करता है. Even mutual fund is regulated by AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, बट स्टिल सेबी का रेगुलेशन होता है क्योंकि वो डील होता है, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड होता है. इरडा रेगुलेट्स इंश्योरेंस सेक्टर एंड म्यूचुअल फंड्स. इरडा इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेट करता है बट म्यूचुअल फंड रेगुलेट नहीं करता. और आरबीआई रेगुलेट्स एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम. नो, इट रेगुलेट्स ओनली बैंकिंग सिस्टम एंड monetary policy but not entire financial system. So option B is correct answer. SEBI regulates stock exchange in India. Also, it regulates mutual funds. Next, which of the following is the result of financial sector reforms? A, inflow of funds from other countries due to globalization. Correct. Option A is correct answer because post globalization मीन्स पोस्ट 1991 ग्लोबलाइजेशन की वजह से एफडीआई और एफआईआई इंक्रीज हुआ है, तो इनफ्लो ऑफ फंड्स हुआ है. करेक्ट. ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट इरोजन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नो, इरोड नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट बूस्ट हुआ है. सी, मेकिंग द फाइनेंशियल सिस्टम मोर कॉम्प्लिकेटेड. नो, इट इज मोर सिंप्लीफाइड. एंड डी, इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. रिस्क मैनेजमेंट हुई है, रिस्क इंक्रीज नहीं हुआ है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन देयर इज इनफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज in the form of foreign direct investment and foreign institutional investment and even for foreign portfolio investment. So option A is correct answer. Next, which of the following statement is correct in case of digitization of banking services? A, internet banking has improved speed, accuracy and flexibility of transactions. Correct. Option A is correct answer.
Let's check others. Mobile banking is a form of internet banking. No, mobile banking is application based and internet banking is website based. So both are related, but not it is not a form of internet banking. UPI is more complex system. No, it is more simplified or user friendly system. And internet banking is application based unregulated banking facility. No, it is regulated by RBI and Banking Act. So option D is also not correct. Option A is correct answer. Next, which of the following is known as additional benefit that is offered with base policy at nominal price? So this question is related to insurance और इसमें पूछा है कि ये ABCD में से कौन सा एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो बेस पॉलिसी के साथ आता है मीन्स वो एड ऑन होता है एट नॉमिनल प्राइस मीन्स मिनिमम प्राइस ऐड करने पे हमें ज्यादा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा सो इट इज राइडर reimbursement, reinsurance और मनी बैक तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राइडर राइडर मीन्स जो एक्सीडेंटल डेथ पे एडिशनल बेनिफिट मिलता है या फिर क्रिटिकल इलनेस वाला पॉइंट कवर होता है वो राइडर में आता है रीइंबर्समेंट इज रिलेटेड टू क्लेम सेटलमेंट री मीन्स इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरर और मनी बैक इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो पीरियडिक रिटर्न प्रोवाइड करता है बट इट इज नॉट एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइडेड एट नॉमिनल प्राइस सो इट इज राइडर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर riders such as accidental death benefit or critical illness cover are covered under base policy along with base policy is called as additional benefit so here we have completed 2025 question paper let's start with 2024 question paper question number 61 match the following group A group B दिया है मनी मार्केट कैपिटल मार्केट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ग्रुप बी में न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टॉक एक्सचेंज दिया है सो मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सो ए का 3 कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बी का 2 प्राइमरी मार्केट न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं सी का 1 एंड डी का 4 सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज इज example of secondary market so D का 4 3214 is correct sequence 3214 option B is correct answer which of the following is included in the definition of foreign bank क्या होती है जिसकी हेड ऑफिस फॉरेन कंट्री में है और जिसका ऑपरेशन इंडिया में भी होता है ब्रांचेस इंडिया में भी है सो अ बैंक हैविंग हेड ऑफिस इन इंडिया एंड ऑपरेट्स अब्रॉड नो अ बैंक हैविंग हेड ऑफिस abroad but operations in India. Correct. Option B is correct answer. Next, RBI influences liquidity and interest rate through number of operating instruments. Which among the below is incorrect? Open market operation, repos, change in bank rate or distorted bank policy. Option D is correct answer. It is not a part of monetary policy instruments. As you know, monetary policy instruments can be direct measures and इनडायरेक्ट मेजर्स और डायरेक्ट मेजर्स में सीआरआर एसएलआर कवर होता है इनडायरेक्ट मेजर में ओपन मार्केट ऑपरेशन रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी ये सब कवर होता है जो बैंक रेट्स चेंज होता है वो सीआरआर एसएलआर में होता है तो distorted bank policy is not a part of a monetary policy instruments. So option D is correct answer. Next, which of the following can be regarded as reinsurance? Reinsurance का मीनिंग क्या होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस निकालती है जो खुद एक इंश्योरेंस कंपनी है टू रिड्यूस इट्स एक्सपोजर सो ऑप्शन ए लिमिटेड हैज अंडरटेकन अ रिस्क इन कोलैबोरेशन विद बी लिमिटेड नो कोलैबोरेशन नहीं होगा A Limited has undertaken a risk. The same risk is later undertaken by B Limited from A Limited. Option B is correct answer. यहाँ पे risk का exposure reduce होता है. A Limited, B Limited came together jointly undertake a risk? No. And A Limited has undertaken risk and cancelled? No.
So option B is most appropriate answer. Next, a money market where funds are traded up to a period ranging between 3 months to 1 year is dash. Call money, notice money, term money or liquid money. Call money is overnight fund, less than 1 day के लिए ट्रेड होता है. Notice money is for 2 days up to 14 days. Term money is traded between 3 months to 1 year, 12 months. So option C is correct answer. And liquid money जैसा कोई term नहीं है. Option C is correct answer. Next, unsecured short-term promissory notes issued at a discount by credit-worthy corporates, primary dealers, and all India financial institution is dash. Commercial bill, commercial paper, certificate of deposit, or treasury bills. So option B is correct answer. Commercial paper. It is a short-term promissory notes issued by corporates. So option B, correct answer. Commercial bills are issued by the businessmen for commercial purpose. Certificate of deposits are issued by the banks and treasury bills are issued by RBI, central bank, in accordance with government. So option B is correct answer. Commercial paper. It is unsecured and short-term promissory notes issued by corporates. Next, which act among the below is governing specific banking function? Indian Coinage Act, Banking Books Evidence Act, Negotiable Instrument Act, or Banking Companies Act? So option A is correct answer. Indian Coinage Act. It provides the fundamental banking function. So option A is correct answer. Next, which of the following is not a challenge faced by business correspondent model? BC model, high maintenance cost, small size transaction, low telecommunication access, or physical proximity and access with customers. Option D is correct answer. Which of the following is not type of digital banking? UPI, internet banking, mobile banking, or central banking system? Option D is correct answer. UPI एप्लीकेशन के थ्रू या लिंक के थ्रू होता है. इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू, और सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ये फिजिकल बैंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी डायरेक्ट and insured one in order to claim for compensation. Which principle of insurance mean the above? Principle of indemnity, subrogation, causa proxima, or utmost good faith? Option C is correct answer. Principle of causa proxima का मीनिंग क्या होता है? Proximate cause means the nearest cause will be considered as the cause of loss. Option C is correct answer. So here we have completed 2024 question paper. Let's start 2023 question paper. Question number 61. Under what circumstance penalty can be imposed on a banking company for submitting false or inaccurate returns when it is unable to pay its debt, when the business is not carried on for public interest, or when bank accept deposit in foreign currency? So option A is correct answer. As per section 46 of the Banking Regulation Act 1949, for submitting false or inaccurate returns, correct answer. Next, in a bank guarantee, the number of parties involved in the agreement are dash. 3, 2, 1, 4. Option A is correct answer. There are 3 parties involved in the bank guarantee. That is the applicant, next the beneficiary, and the guarantor. So there are 3 parties involved in the agreement. Next, the following one is absolutely essential for special crossing. Special crossing के लिए क्या essential है? 2 parallel transverse lines, word and company, the words non-negotiable, or name of a banker. Option D is correct answer. बाकी A, B, C तीनों जनरल क्रॉसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, पर नेम ऑफ द बैंकर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल क्रॉसिंग. नेक्स्ट, which of the following is the purpose of phishing email? Extracting fund, personal financial confidential data. Correct. Option A is correct answer.
misrepresentation of fact, email to divert attention or email to promote marine product, not correct answer. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. फिशिंग का मीनिंग होता है एक्सट्रैक्टिंग पर्सनल फाइनेंशियल डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ credit where reciprocal liabilities of local banks are counterbalanced against one. So is it clearing house, stock exchange, discount house और treasury? Option A is correct answer. Clearing house क्या करता है? एक अकाउंट से डेबिट करके दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करता है. ये काम करने का, ये एक्टिविटी करने का काम क्लियरिंग हाउस का होता है. नेक्स्ट, a transaction where financial securities are issued against cash flow generated from pool of assets is termed as dash. Securitization, credit swap, credit linked notes or return swaps. So option A is correct answer. It is securitization. Next, dash is a conversion of foreign currency bill into home currency liability. So is it confirmation, securitization, domestic capitalization or crystallization? Option D is correct answer. It is crystallization. Next, this technique assumes the basic principle of vital few, tribal many, while considering inventory structure of any organization and is popularly known as dash. ABC analysis, bill of material, economic order quantity or perpetual inventory system. Option A is correct answer. It is activity based costing or ABC analysis. ये जनरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट तो नहीं है, पर स्टिल अगर क्वेश्चन नंबर 68 में ही कवर हो चुका है तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है. ये रिप्रेजेंट करता है कि इन्वेंट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए, बी एंड सी कैटेगरी, जिसमें ए कैटेगरी होगी हाई क्वालिटी गुड्स और हाई क्वांटिटी गुड्स जिसकी कॉस्ट बहुत कम है. दूसरा कैटेगरी जिसमें कम क्वांटिटी है पर जिसकी कॉस्ट ज्यादा है. और तीसरा क्वांटिटी है, तीसरी कैटेगरी है जहां पर एवरेज क्वालिटी, एवरेज क्वांटिटी एंड एवरेज कॉस्ट होता है. तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कवर होता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑन हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन बेसल 1 फ्रेमवर्क? 4, 3, 2, 1. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. बेसल फ्रेमवर्क, बेसल 1 फ्रेमवर्क में सिर्फ एक ही पिलर है, फिर बेसल 2 और 3 से 3 पिलर्स आ गए. सो बेसल 1 पूछा है तो 1 पिलर, बेसल 2 एंड 3 में 3 पिलर्स आर देयर. ओके, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, डैश इज अ मार्केट एक्सचेंज रेट डिसाइडेड बाय demand supply factors, floating exchange rate, indirect exchange rate, variable rate or spot rate. So option A is correct answer. Floating exchange rate system, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में बताया कि एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड प्योरली बाय मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे ही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 2023 क्वेश्चन पेपर आल्सो. सो आज हमने यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 2023, 2024, 2025 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए. ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग.